What makes you different from animals? Your education. Hello everyone, welcome to the Shilpa Kathait show. And today we have Nupur Sharma with us as a guest. Welcome Nupur Sharma. Hi Shilpa. इनके बारे में आपको बता दें कि she is लाइफ कोच, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, वेल-बीइंग काउंसलर और एजुकेशन में इतना आगे बढ़ने के बाद भी इन्होंने अपने आप को इतना ग्राउंडेड रखा है और इतना कुछ लाइफ में अचीव किया है। आइए इनसे ही पूछते हैं कि नुपुर, आप एक बताएंगे कि कैसे आप ये मेडिकल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर बनी और क्या क्या आपने फेस किया इसमें? First of all, I would like to thank Shilpa for inviting me. And everybody, as life is very mysterious nowadays. People are suffering with so much depression. People are going through a lot of things in phases in life. So my story is something like that. That as everybody is suffering from emotional distress and all. Emotional distress, so आज के time पे this is the main agenda. I must say this is the main topic. Like during the time of coronavirus, in fact, we have heard so many people they have committed suicide and people they are getting depressed and sitting at home. Yeah. तो आपने कैसे चीजें डील की और कुछ बताइए इसी चीज के लिए? See, like COVID में भी है, अगर लोग घर में बैठे हैं तो आई कुड सजेस्ट ओनली कि उन लोगों को अकेले में रह करके बिजी रहना चाहिए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना चाहिए, अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए और इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना चाहिए कि बाहर की नेगेटिविटी उनको टच नहीं करे। बाकी आई वाज टेलिंग यू कि मैं इस लाइन में कैसे आई, कैसे मुझे इस लाइन के बारे में पता चला। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने लाइक इन द मैरिज I was going through a lot of bad phases. अच्छा, in your personal life? Yeah. I was going through a lot of problems in my life. Okay. The personal issues and the family issues. But then also I compromised every situation for like 14 years. I compromised every situation कि मैं उसको किसी तरह से झेल सकूं, उसको किसी तरह से जीवन में आगे बढ़ा सकूं। लेकिन as I thought कि नहीं चल पाएगी चीज़ें, तो I started studying the psychology, the clinical psychology. So before you speak, before you proceed, so I would like to appreciate Nupur for such courage and revealing such things about your personal life on camera. Not everyone can do this. I really appreciate Nupur. And आपका जो एक पॉजिटिव ऑरा है आपके फेस पे, जो एक ये हैप्पीनेस दिखती है जो सबको इतना इंस्पायर करती है। शी इज सच अ चार्मिंग पर्सन और इतने सोफिस्टिकेटेडली इन्होंने अपने बारे में बताया कि शी वाज आल्सो फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन पर्सनल लाइफ और जहाँ से इन्होंने शायद इंस्पिरेशन ली है। सो नुपुर, हम सच में डेस्परेटली जानना चाहेंगे कि क्या वो बातें थी और कैसे आप इस चीज़ से अपने आप को ओवरकम कर पाई हैं? पहले जब शुरुआत हुई तो जीवन बहुत मुश्किल लगने लगा। इट वॉज वेरी it was a very difficult situation for me for coping up with everyday anxieties. I was like in those days I was literally myself suffering from anxiety disorders. Myself suffering from anxiety disorders. I was going through a lot of fear in my life. Fear of losing things, fear of losing my husband, fear of losing my child, fear of losing the family. But one should know that you cannot cling to the things. That you have to let it go. The things should be let it go. You must let it go. Yeah. So certainly when I did have some panic attacks with me, when I suffered a lot of palpitation, lot of pain in the heart, I was having severe headache every time. I was because you were worried at that time. I was insomniac. So it gave me a lot of pressure every day. So nobody helped you out in that situation. Nobody helped you. Did you discuss this thing with anyone in your family member, your parents? See, the situation was not like that because nobody could understand the feelings of the others, right? That is why a clinical psychologist is there. Because sometimes, what you have to explain to others, you cannot explain, and the other person cannot understand you. So this is the bad part of life. It is a bad part of life, but we have to go through it. So one day I felt a lot of anxiety. I was alone in the home and I was feeling a lot of anxiety. I was crying. I was feeling very nervous. But on that day I felt that no, I cannot go through this way in life. How can I cope with the positive situations then? And that day I changed my mind.
I studied clinical psychology, and I did my internship. The best also. part of your life, I must say, that you have chosen to study about such things rather than getting more depressed and leaving everything in Yeah, life. I wanted to know why Yeah. a person is so depressed. Why he feels so depressed and alone. Why the person is feeling so alone every time. Right, right. What are the situations which make him alone? Why he cannot share those things with other people? Exactly. I wanted to know. I was curious to know. And now, as being a rehabilitation counselor, now I'm happy. I'm positive, and now I teach people how to cure panic attacks, how to cure anxiety disorders, so that they could also live a good and happy life. वो सिचुएशन से नहीं गुजरे जो आपने फेस की, कहीं ना कहीं आपने अपने दर्द से ये सीखा कि दूसरों का दर्द कैसे कम करना है, और ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। नुपुर, आपने सच में कि बहुत ही बड़ा काम किया है कि अपने दुख से सीखकर लोगों का दुख कम करना शुरू किया आपने, बिकॉज नॉट मेनी पीपल टुडे इन दिस वर्ल्ड दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी एंड मेंटल डिसऑर्डर्स एंड पैनिक अटैक्स, और हेल्प करने के शायद कोई नहीं होता उनको, बट नुपुर यू आर देयर फॉर एवरीवन। आई मस्ट टेल टू द ऑडियंस कि शी इज जस्ट अ कॉल अवे, यू मस्ट कॉन्टैक्ट हर फॉर इन सच सिचुएशन इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो नुपुर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा इंसिडेंट जहां आपने लगा कि आपने किसी की लाइफ में सच में एक बहुत बड़ा एक चेंज लेकर आए हैं। Yeah, I'll tell you a story of a person. He's a college-going guy. I was doing my internship. So basically, you started studying through the institution, particularly. I did my internship from the hospital. Okay. Yeah. So you took it very seriously. Yeah, I took it very seriously. So I mean, I wanted to change the way people think, because I myself suffered a lot in my life. So I met a person in my hospital, and he was a college-going guy. He was having an affair with some lady, right? So he was like dished by that girl, and he became aloof from the society because he was in depression. He was having anxiety attacks. He was having panic attacks. He could not share the things with the other person, what he's feeling. And he keeps on crying day and night, and he was not like sleeping. So one day he was like, he came to me for getting a counseling. So he was like crying in front of me, just started weeping in front of me, and he was so helpless, and I really feel pity on him. How can I help him? He was so miserable. I mean, he was a very handsome guy. He was looking very, very handsome, and he was a knowledgeable person. But then also, he cannot cope up with the society because of depression, because of the anxiety he's having. So he told me his story that I suffer with panic attacks because I keep on thinking. Then I told him that to be busy in the life every time, make a schedule, take the therapy of breathing techniques, how to breathe regularly. Breathing techniques should be all right. And he obeyed everything. Yeah, he obeyed. Yeah. And now he's 50%. He's okay with all the situations, and he's really thankful to me. He feels thankful to me. He must be thankful to you, because you really helped him out, and I must again appreciate her for this big help to someone who was facing such big problem in this life, because हर किसी के पास उतना करेज नहीं होता कि अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाए, और क्या रीजंस रहते हैं जिंदगी में डिप्रेशन के, वो शायद सब शेयर करना नहीं जानते हैं. Everyone cannot open the heart out. But you are doing a wonderful job, Nupur, I must say. कि आपने उसको 50% ठीक कर दिया, and I really wish कि बाकी 50% भी आप उसको ठीक कर पाए. तो I would like to ask you कि आपकी जो जिंदगी में जितनी परेशानियां आ रही थी, क्या आप उन चीज़ों से बाहर आ पाए, और कैसे अपनी फैमिली को आपने इस चीज़ में मैंने एक करके अपनी चीज़ों को सुलझाना शुरू किया. जैसे कि क्या कहा जाता है ना, कि अगर कांटों के अंदर एक मखमल की चीज़ फंस जाती है, तो उसको कैसे एक करके ही निकाला जाता है. क्योंकि डिप्रेशन को पाल लेना बहुत आसान है. इट्स वेरी इजी टू गो बैक इनटू अ डिप्रेशन, लेकिन उससे निकलना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. क्यों? क्योंकि बिकॉज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी अटैक्स, you feel nauseous, you feel headache, you can't sleep, you can't talk, you can't even stand properly, प्रोडक्टिव नहीं कर पाते, you don't feel hungry. So इतनी सारी सिचुएशन से आदमी कोप अप नहीं कर सकता अकेले. एक करके उसे अपनी चीज़ों को सुलझाना पड़ता है. लेकिन आई बेट दैट इफ अ पर्सन रियली थिंक्स कि मुझे ठीक होना है और मुझे आगे बढ़ना है, तो वो इंसान एक करके अपने आप को ठीक करना शुरू कर सकता है. लेकिन उसके लिए उसे थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है, थोड़ी मेडिकेशंस की ज़रूरत है,
लेकिन काउंसलिंग उसको ज़्यादा अफेक्ट करती है, बिकॉज ये एक माइंड की डिजीज़ है, ये कोई शारीरिक डिजीज़ नहीं है, ये आपकी दिमागी बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है। तो आप क्या प्रेफर करती हैं, इसमें लोगों को मेडिसिन भी लेनी चाहिए काउंसलिंग से? नहीं, मैं प्रेफर करूंगी, मेडिकेशंस दी जाती हैं, लेकिन न्यूरोसर्जन्स देते हैं मेडिसिन उनकी इस चीज़ों के लिए, एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक इंसान की मानसिकता को ही आप बदल दीजिए। कि वो लगता है नुपुर कि किसी की मानसिकता बदलना आसान होता है? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और उसको भी करेज होना चाहिए कि मुझे थोड़ा सा चेंज होना है, क्योंकि अगर हम उसका 1% लेंगे तो हम उसे 10% दे सकते हैं। उसको थोड़ा सा अपने अंदर चाह होनी चाहिए कि मुझे ठीक होना है, और लेकिन ये आई एम श्योर कि जो लोग ये सोचते हैं वो ठीक हो सकते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कहने को ये कैंसर से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर ये इंसान मन में सोच ले तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसे दृढ़ निश्चय कह सकते हैं, डिटर्मिनेशन इज द बिगेस्ट हेल्प व्हेन यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, कि आपका अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव ऑरा, और आपके मन में अगर आपने ठान लिया कि आप इस चीज़ से बाहर आएंगे तो आप बाहर आ सकते हैं। यस, यू नीड सम काउंसलिंग। अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने लव वन से बात कीजिए, और हमारी काउंसलर आपके सामने बैठी हैं नुपुर शर्मा, इनसे बात कीजिए, और डेफिनेटली अपने एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आगे बढ़ते जाइए। तो नुपुर, हमें तो बहुत ही अच्छी लग रही है आपकी बातें, मन कर रहा है कि अभी ढेर सारी हम आपसे कहानियाँ पूछे कि क्या क्या हुआ। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की अपने पर्सनल लाइफ में, तो क्या वो सब चीज़ें से आप ओवरकम कर पाई हैं, एंड आर इज द फैमिली लिविंग हैप्पीली ऑल टुगेदर, या फिर उस चीज़ को आपने पीछे छोड़कर फिर आपने आगे बढ़ना? मैं उस चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी हूँ अपने जीवन में। आई एम विद माय किड एंड लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। So you are taking care of your kid all alone. All alone. Yeah. This is a big responsibility. This is a big motivation and a lesson to me in life. How many kids do you have? I have only one kid. One kid. Yeah. One daughter or son? One son. One son. Yeah. Okay. So you are taking a lot of care about your children also, and you are spreading the happiness in the world around. That is a wonderful thing. हमें तो बहुत ही अच्छा लगा नुपुर आपसे बात करके। आपका ये पॉजिटिव ऑरा सब तक पहुँचे, इनकी ये खूबसूरत स्माइल सबको ऐसे इंस्पायर करती रहे, और ये मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाना एक पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत ज़रूरी है। एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू आवर यूथ these days? To youth, I can only give a message: be happy, become busy, don't involve into drug abuse things. Please, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ड्रग अब्यूज में ना जाएं, क्योंकि आजकल की यूथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। दे कैन टेक सुसाइड एक्शंस ऑल्सो, दे कैन गो इनटू ड्रग्स ऑल्सो। सो मेरी विनती रहेगी कि वो इन सब चीज़ों में ना जा करके हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, ताकि वो जीवन में The basic part is कि just be busy in your life, क्योंकि खाली दिमाग होता है शैतान का घर, empty mind is devil's workshop, और इस वर्कशॉप को डेविल के होने के बजाय अच्छे पॉजिटिव पर्सन के वर्कशॉप बनाते हुए अच्छे काम कीजिए और अपने आप को बिजी रखिए, और ऐसे ही हमारे शोज को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉजिटिव शो, द पॉजिटिव शोज ऑफ दिस शिल्पा कथैत शो। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड be with us. Thank you so much. Thank you.